Hi everyone, welcome to Exerciser and this is सरगम गेरा. Here we are with another workout video और आज के वीडियो में हम ट्रेन करेंगे बैक. We will be doing mix of compound and isolation movements and I'm sure you'll really feel good after performing this in your gyms. Let's start. We are starting our workout with lat pull down. Make sure your knees are properly tucked under the pad. Your grip should be wider than shoulders, and whenever you are pulling the bar, make sure to bring it as close to upper chest as possible. Try to keep your back upright and straight. Choose a weight in a way that you can perform the exercise in a controlled manner and with better technique. And your target should be 3 sets of 15 repetitions each. This exercise is great for lat muscles along with giving a good overall shape to your back. Second exercise is bend over row. It is a compound movement and one of the best exercise for your upper back. You should be careful while performing this exercise and make sure that if you want to lift heavy, you are wearing a belt. For this exercise, your grip should be wider than shoulders. You should bend at an angle of 40 to 45 degree, and whenever you are lifting the bar, make sure to bring it closer to the abs. Squeeze your back muscles, hold it for 2 seconds and then slowly release the bar. आपको 4 sets perform करने हैं with 12 to 15 repetitions each. We will be doing next 2 exercises in superset, out of which first is T-bar row. It is an old school exercise which is a great exercise to train your entire back. हो सकता है आपके जिम में इसकी मशीन ना हो, बट आप सिंपली रॉड को एक कॉर्नर में प्लेस करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ. और ग्रिप के लिए यू कैन यूज वी हैंडल. The techniques of this exercise are very similar to bend over row. बस आप इतना ध्यान रखें कि आप करेक्ट posture से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें. You have to do 12 repetitions and without taking any break, we will move to seated rowing. और इस एक्सरसाइज के लिए हम straight bar का यूज़ करेंगे with underhand grip and your grip should be little narrower than your shoulders. Pull the bar with full range of motion, which means bring it as close to abs as possible so that आप muscles को अच्छे से target कर पाएं. एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए सीधा बैठें और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड ना करें. You have to do 12 repetitions और उसके बाद ही आपका सुपर सेट का एक सेट कंप्लीट होगा और आपको करने हैं 3 सेट्स. फोर्थ एक्सरसाइज इज लो पुली रो, जिसके लिए आप पुली को लोएस्ट पॉइंट पे अटैच कर लें एंड वी आर यूजिंग अ डी हैंडल हियर और मशीन से आप थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएं. थ्रू आउट द एक्सरसाइज आप नीज को बेंड रखें, हैंडल को ओवर हैंड ग्रिप के साथ पुल करें और हाफ द वे आने के बाद ग्रिप को रोटेट कर दें एंड पुल एज मच एज यू कैन. आपको दोनों हैंड से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है एंड यू हैव टू डू 15 to 20 repetitions फ्रॉम ईच हैंड, जिसके बाद आपका एक सेट कंप्लीट होगा और आपको करने हैं 2 सेट्स. फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज को भी हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे, आउट ऑफ विच फर्स्ट इज डेडलिफ्ट. ये बैक के साथ साथ आपकी एंटायर पोस्टीरियर बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है. कीप योर कोर ब्रेस्ड एंड मेक श्योर योर बैक इज टाइट एंड स्ट्रेट थ्रू आउट द मूवमेंट एंड कीप द बार क्लोजर टू द बॉडी. आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्सरसाइज हियर, बट मेक श्योर दैट यू वेयर अ बेल्ट whenever you are performing the exercise. You have to do 10 to 12 repetitions and without taking any break, we will move to next exercise, which is reverse grip lat pull down.
इस एक्सरसाइज को हम अंडर हैंड ग्रिप से परफॉर्म करेंगे एंड योर ग्रिप विल बी लिटिल नैरोअर दैन योर शोल्डर्स। और एक्सरसाइज का पोस्चर एंड टेक्निक विल बी सिमिलर टू लैट पुल डाउन। Lot of people are confused about breathing pattern in exercises. तो आपको ये समझना है, whenever the weight is going against the gravity, at that time you have to breathe out, which means इस एक्सरसाइज में जब भी आप बार को पुल कर रहे हैं towards your chest, तब आपको breathe out करना है। इसके भी आपको 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं और तब आपका कंप्लीट होगा 1 सेट एंड यू हैव टू डू 3 सेट्स। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर बैक वर्कआउट। So this was today's video. I hope you like it. Please share the videos as much as possible and especially to my fellow females. I hope कि आपको content से बहुत सारी information मिल रही होगी. I'll keep making such content for you and as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.